We'll do line integrals. Line integrals will do. तो simple word में अगर देखें line integral is an integral. Definition, actually definition is not required. Line integral is an integral which is evaluated along with a curve. Evaluated along with a curve or with a line, we can say. With a curve is a better word. And it is denoted by this one, integral over C f dot dr, where f is there in our question. Dr we have to find out. How to find out dr means, as an example, I'll tell you. If suppose your f value is equal to f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap, and dr value means, you know what is r here? R will be, this vector r will be, always remember, if it is not there in the question also, we assume this is the value xi plus yj plus zk. This is the value. If it is not there in the question also, we can understand. ये आपको memorize कर लेना है. Now dot product with dr means everything we multiply with r. This is dxi plus dyj plus dzk. Now again we apply the same rule, and that is I dot I is 1. So when you are going to find out integral over C f dot dr value, that work we can do it all together. Integral over C f dot dr value. It is not only dot product, it may be cross product also. So this is what integral over C. I dot I is 1. So what we have to write here? f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. This is the f dot dr value, which is also called line integral. तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं लाइन इंटीग्रल पे, वो एक बार अपन देख लेंगे. ओके, नो आंसर. Answer is not giving. Nobody is giving any answer. यस सर. क्वेश्चंस करेंगे या नहीं करेंगे, बोलिए. हाँ सर करेंगे. करेंगे. The first question is, if f is equals to vector f is equal to x square plus y square I cap, x square plus y square I cap minus 2 xy j cap
evaluate what we have to evaluate integral over c f dot dr की वैल्यू evaluate करनी है. Okay, just one second. तो दूसरे स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है तो एग्जाम में क्लास ज्वाइन ही नहीं कर. Okay, so what we have to evaluate here is, it is clearly mentioned here in our question, that is we have to evaluate integral over c f dot dr. This one we have to evaluate, where c is the rectangle, where curve c is the rectangle, curve c is the rectangle in xy plane bounded by y is equal to 0, y is equal to b, y is equal to 0, comma y is equal to b, comma x is equal to 0, comma x is equal to a. ये क्वेश्चन है, देखिए. We have to evaluate इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू इवॉल्वेट करना है. सी क्या है? अभी तो ये एक रेक्टेंगल है, वो ट्राइंगल भी हो सकता, वो पैराबोला भी हो सकता, ठीक है ना, वो फिगर कुछ भी हो सकता. सर एक बार लाइन इंटीग्रल का ये आप टाइम पे डेफिनेशन. ज्वाइन करना, माँ टाइम पे ज्वाइन करना क्लास आप. सर वो इंटरनेट का इश्यू आ गया था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रही थी. इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है. लाइन इंटीग्रल का मतलब जो भी इंटीग्रेशन लाइन के अराउंड होता या फिर कर्व के अराउंड होता, उसको अपन लाइन इंटीग्रल बोलते. ठीक है. ओके. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एफ डॉट डी आर इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल. इसको एक और वर्ड में यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखता हूँ, वर्क डन. फाइंड द वर्क डन. वर्क डन का मतलब ये एफ डॉट डी आर की वैल्यू है. वर्क डन अगर वर्ड्स में बोला तो ओके सर. ठीक है. या कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्कुलेशन बोलेंगे, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ एफ. पूरों का एक ही मीनिंग है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? एफ इज देयर इन अवर क्वेश्चन, यहाँ पर भी एफ है देखिए. और टी आर का मतलब आर वैल्यूज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ डी, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, आई डॉट आई वन एफ वन डी एक्स एफ टू डी वाई एफ थ्री डी जेड. इसी को लाइन इंटीग्रल बोलते हैं. क्वेश्चन से आपको टोटल आइडिया हो जाता है कि क्या करना है. ठीक है ना. ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एफ इज दिस वन, वी हैव टू इवॉल्वेट एफ डॉट डी आर की वैल्यू. और सी कहाँ पर है? सी एक रेक्टेंगल है, ठीक है. और ओके. रेक्टेंगल के जो बाउंड्रीज है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो पहले अपन इमीडिएटली फिगर ड्रॉ करना है. फिगर में अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में डिस्कशन रहो या ना रहो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी यू हैव टू ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस ओनली. तो मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. नाउ एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब कोई एक लाइन ऐसा हो सकती है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है. एक्स इज इक्वल टू ए एंड ये पैरेलल टू वाई एक्सिस ये. अब इसके नेम्स में दे रहा हूँ, देखिए. I'll give the names so then you can get the figure idea. So look at this one. This is our x-axis. This is our y-axis. This is the coordinate. You know that it is 0, 0. And it is given in our question. X-axis की इक्वेशन तो नहीं दिया, आपको समझ लेना है
You have to understand y is equal to 0. Y एक्सिस की इक्वेशन x is equal to 0. ये क्वेश्चन में देने दो या ना देने दो, आप ऐसे उतार लेंगे. अब x is equal to a मतलब any line which is parallel to y axis is x is equal to a. Any line which is parallel to y axis is of the form y is equal to b. ओके सर. ये पूरे चीजों को यूज करके आप चाहे तो ये कोऑर्डिनेट्स बना लो, बेहतर है. If this point is a, then definitely this is a comma 0. If this point is a and y is b, means definitely this is a comma b. And if this is 0, 0 comma b is this point. ठीक है, लाइन इंटीग्रल करना है. कितने पार्ट्स हो रहे हैं रेक्टेंगल में? दिस इज द पार्ट 1, दैट इज c1. दिस इज द पार्ट 2, दैट इज c2. दिस इज द पार्ट 3, दैट इज c3. दिस इज द पार्ट 4, दैट इज c4. मतलब ये जो लाइन इंटीग्रल आपको करना है, कौन सी? इंटीग्रल ओवर c एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, वो कितने पार्ट से मिलके बन रहा हूँ? 4 पार्ट्स. मतलब 4 पार्ट्स है सर. C1 से C1 एफ डॉट डी आर C4 प्लस C2 एफ डॉट डी आर प्लस C3 एफ डॉट डी आर प्लस C4. एफ डॉट डी आर. C1 C2 C3 C4 से मिलके जो फिगर बन रहा है, ये फिगर, उसके ऊपर आपको लाइन इंटीग्रल को इवाल्युएट करना है. ठीक है ना? सब में एक चीज कॉमन है, देखिए एफ डॉट डी आर कॉमन सब में आ रहा है. सो व्हाट विल डू, बेटर विल फाइंड आउट एफ डॉट डी आर वैल्यू. सबको आ रहा ना वो? यस सर. we'll find out f dot dr, that is equal to, f is there in the question, that is x X square square plus y square. plus y square This is I cap and minus 2xy j cap. इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको. डॉट प्रोडक्ट dxi प्लस dyj. एक्चुअली dz के भी आना चाहिए, बट अपने f में k वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, कैसा भी जीरो हो जाता है. So now look at I dot I is 1, so what's left of? x square plus y square. Dx. Yes. X square plus y square dx. Now j dot j is 1, means what's left of? Minus 2xy dy. dy. ये आपको f डॉट डी आर की वैल्यू आ गई, कॉमनली सबके लिए चाहिए. ठीक है ना? Yes. अब अपन एक काम करेंगे, C1 C2 C3 C4 पे लिमिट्स क्या होते वो एक ही बार में फाइंड आउट कर लेंगे. डायरेक्टली पूरे वैल्यूज एक ही बार में सब्स्टिट्यूट करके एक ही बार में प्रॉब्लम को खत्म कर. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन C1, आप चाहे तो अलोंग C1 भी लिख लो. व्हाट आर द बाउंड्रीज? y की वैल्यू क्या है इसमें? यस, हेलो. y is 0 and this implies x square dx. डोर बंद कर दो. डिफरेंशिएट करें तो dy भी 0. Okay, and now x limits are, you can see, 0 to a, and x limits are x is equal to 0 to x is equal to a. अब चाहे तो पूरा लिख लो, the limits of x are, या फिर x varies from, आपको on C1. C1 पे क्या है कंडीशन? look at this, x is equal to a, और जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, dx become 0.
और ये जो y के लिमिट्स आते हैं, क्या होते हैं y के लिमिट्स? देखते हैं 0 to b, है ना? यस सर। y is equal to 0 to y is equal to b. Next on C3, y is equal to b, which implies that dy will be 0. डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 0 हो जाता. एंड अगेन x varies from x के लिमिट्स a to 0. x is equal to a to x is equal to 0. लास्ट में ऑन C4, x is equal to 0. This implies dx also 0, and y limits are y is equals to, यहाँ पर देखिए y is equals to क्या है, y की वैल्यू b to 0. B2 0. So we put all these values, पूरा एक ही बार में कर रहे हैं ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें. एफ डॉट डी आर की जो इक्वेशन नंबर 1 आई है आपके पास, 1 में ये पूरा काम एक ही बार कर दिए तो आपका आंसर आ जाए. इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू एक ही बार में आ जाए. एलोकेट. फर्स्ट पार्ट C1 में लिमिट्स क्या है? 0 to a. x इज इक्वल टू 0 to a. ओके, ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके अंदर? इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में y0 dy0 रखें C1 के लिए. तो y0 मतलब ये बात 0, dy0 मतलब सेकंड पार्ट 0. तो कितना आंसर आ जाएगा? खाली X square स्क्वायर dx. dx. ये प्रॉब्लम कितना शॉर्ट हो जा रहा है देखिए आप. प्लस नाउ y के लिमिट्स 0 से Y is लेके b equal तक, to 0 to b. ठीक है. नाउ x इज इक्वल टू ए dx0, फिर इसमें रखिए x0, तो मतलब x इज इक्वल टू ए, सॉरी x इज इक्वल टू ए और dx फर्स्ट पार्ट 0. ये क्या आ जाता है? ये आंसर है -2ay करेक्ट. प्लस थर्ड वन, फिर x की लिमिट a to 0. नाउ y की प्लेस पे b dy0 चले जाएगा. y की प्लेस पे b रखेंगे x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx. नाउ फोर्थ पार्ट का आंसर देखिए x0 dx0. x0 मतलब सेकंड पार्ट 0, dx0 मतलब फर्स्ट पार्ट 0. इसमें फोर्थ वाला जो C4 का आंसर है वो आता ही नहीं, 0 हो जाता. which is equal to, what is the integration of x square? x cube by 3. Limits are 0 to a. ये देखिए y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, ये -2 है तो बाहर चले जाएंगे. y का इंटीग्रेशन हो जाता y स्क्वायर बाई 2, और इसके जो लिमिट्स है वो है 0 to b. सर C4 का नहीं करे सर. C4 में देखो, C4 में क्या है कंडीशन? x0 dx0. x0 मतलब सेकंड पार्ट 0, dx0 मतलब फर्स्ट पार्ट 0, मतलब फोर्थ इंटीग्रल आता है इसमें. अच्छा ठीक है. नाउ अगेन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स. और ये जो लिमिट्स है क्या है? a to 0. अब इसको सिंपली लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ. तो नेक्स्ट पेज में करना पड़ता है. लोकेट यहाँ पे से इसका कंटिन्यूशन नहीं करता हूँ. अपर लिमिट करेंगे a क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट इज 0. दिस इज which value we are finding? Integral over c f dot dr value we are finding, which is equal to a cube by 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में तो कैसा भी वो 0 से, so forget about it. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. a is a constant, upper limit is y square.
y की प्लेस पे b रखे तो b स्क्वायर माइनस 0, तो मतलब क्या आ जाएगा, माइनस बीस। ए बी स्क्वायर, ए तो एक बाहर है ना। यस सर। नेक्स्ट अपर लिमिट इसमें रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे a क्यूब बाई 3। देखिए मैं बता, ये एक पूरा पार्ट यहाँ पर ऐसा लिख देना अपर लिमिट, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग हियर, 0 माइनस लोअर लिमिट इज a क्यूब बाई 3 एंड x की प्लेस पे ये रखे तो b स्क्वायर है। ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई, प्लस है शायद सर। हाँ प्लस है, देखो, शायद। यस प्लस है। हाँ, प्लस बी स्क्वायर ओके एक्स। विल राइट प्लस a क्यूब बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया माइनस a क्यूब बाई 3 प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी स्क्वायर। Now look at these two terms are cancelled. Finally, the answer is minus ab square. माइनस टू एक्स। So answer is minus 2ab square is the answer. This is the answer of integral over c f dot dr की वैल्यू। ठीक है, this is the line integral we have done just now। ठीक है, एक क्वेश्चन में और एक एक करा देता हूँ उसके ऊपर, so like you can understand what is going on और क्या क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं करने से। दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, यहीं पे करता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन है लाइन इंटीग्रल के ऊपर। इफ line integral is very important to understand Green's theorem and Stokes theorem. F is equals to 3xy I cap, 3xy I cap minus y square j cap. अब्रा, हेलो। जी सर। जी सर। इस सरफेस इंटीग्रल कराने से पहले मैं जो डीएस के वैल्यूज का एक पीडीएफ भेजा था, वो है आपके पास? पीडीएफ नहीं है सर मेरे पास अभी। कैसा पढ़ रहे हैं, एग्जाम कैसा लिख रहे हैं कौन सा पीडीएफ सर बोल रहे हैं सर आप? आप? कौन सा बोल रहे, सरफेस इंटीग्रल पढ़े ना अभी इससे पहले? हाँ। हम्म, कैसा पढ़े सरफेस इंटीग्रल? क्लास में था ना सर। एक पीडीएफ सेंड नहीं करा आप था? कुछ भी नहीं भेजे? एक अब भी नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अपन पीडीएफ क्लास में पढ़े सर, सरफेस इंटीग्रल, उसका पीडीएफ आप नहीं बनाए थे कुछ भी? मल्टीपल इंटीग्रल्स करे थे अपन ऑनलाइन। नए बनाए बोल के बोल रहा हूँ मैं आपको। हम्म, नए बनाए बगैर ही पूछ रहा हूँ मैं आपको, पीडीएफ का है बोल के। नहीं सर, मतलब जब का जब तो क्लास के बाद तो आप कुछ भी नहीं भेजे थे, क्लास डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास थी सर वो। मेरे को याद है। अच्छा आप मेरे को ये बोलो, एक्स वाई प्लेन पे डीएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं सरफेस इंटीग्रल? नो आइडिया। एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं रहती सर, खाली अच्छा जेड का नहीं पूछा मैं, डीएस पूछा आप। डी एक्स आई प्लस डी वाई जेड। वेरी गुड। फ्राइडे है ना एग्जाम आपका, यही लिखो जाके। प्रॉब्लम, नाउ सॉल्यूशन, look at this. What is the question here? F is equal to 3xy I cap minus y square j cap. We have to evaluate integral over c f dot dr value where c is the curve, y is equal to 2x square in xy plane.
एंड द पॉइंट्स ऑल्सो देयर 0 0 से 1 2 तक करना है, 1 1 तक भी कर सकते हैं अपन, मतलब क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गिविंग लाइक दिस इट मे बी गिवन दैट 1 से करो बोल के भी दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। तो पैराबोला विल बी, सपोज दिस इज योर पैराबोला, ये वाला, ये वाला y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर होता है पैराबोला, राइट। सपोज ये पॉइंट अगर 0 0 है, सबको पता ही है 0 0 छोटा बोल के, ये x ये 1, ये सपोज ये कोई एक पॉइंट है 1 2, ठीक है। सो दिस लाइन इंटीग्रल वी आर फाइंडिंग, मतलब ये पाथ को आप फाइंड आउट करें यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे 0 0 से 1 2 तक की वैल्यू लाइन इंटीग्रल से फाइंड आउट करें। दिस इज द ओनली वर्क वी आर डूइंग हियर, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सो लेट्स गिव द आंसर ऑफ दिस। ओके, एफ डॉट डी आर कर लेंगे पहले, एफ डॉट डी आर, व्हाट इज एफ, 3x y I cap minus y square j cap, this is dot product with dxi plus dyj, एक्चुअली dz के भी आना, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट अगर वो f में ही नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं लेना। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई, इफ यू टेक द डॉट प्रोडक्ट, what you are getting, 3x square dx you are getting here, and j dot j1 is what you are getting here, y square dy you are getting here. So it is the value of what, f dot dr value। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स की जरूरत रहती है। सो नाउ व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल ओवर c f dot dr, f dot dr, it means this is also integral over c 3xy dx minus y square dy। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है जो था, यहाँ पर dx भी है, यहाँ पर dy भी है, अब अपन किसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पर मेरा आंसर ये है, हियर वी हैव ए ऑप्शन। क्वेश्चन में आपको एक फैसिलिटी देता हूँ, तो वो फैसिलिटी को यूज करके आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ हिंट देता क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हिंट है देखिए, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, हिंट है ना, क्वेश्चन में ही है हिंट, मतलब y की वैल्यू को x में कन्वर्ट करो बोल रहा हूँ, तो जहाँ पर भी y है वो x में कन्वर्ट हो जाता, तो ये पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो जाता। देन वी टेक द लिमिट्स ऑफ x, x के लिमिट क्या होते हैं, 0 से 1 होते है ना, y के लिए बोल तो 0 से 2 होते, तो दो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो दिस इज y वैल्यू, व्हेन वी डिफरेंशिएट dy becomes x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब 2 2 4x dx, ठीक है। और यहाँ पर अपन किसके लिमिट्स ले रहे हैं, x के लिमिट्स ले लेंगे, लिमिट्स ऑफ x, वो क्या होते बोला अभी में, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो ये पूरे चीज़ों को आप इसमें ये क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करें, इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, दिस इज इन लिमिट्स आर x is equal to 0 to 1, okay, 3x is there, y value is 2x square into dx minus y square मतलब उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 4 x power 4, and what is dy, dy is 4x dx। अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो गया,
This is 0 to 1. Simplify and take dx common. If you simplify, 3 to the 6x cube minus 4 to the 16x to the power of 5 into dx. Now finally we have to integrate with respect to x. This is 6 as it is. X cube का integration क्या हो जाता? X to the power of 4 by 4 minus 16 again as it is. X to the power of 6 by 6. And their limits are 0 to 1. Upper limit minus lower limit. This is 6 by 4 minus 16 by 6. Lower limit में कैसा भी आंसर 0 छोटा. What's the answer of this? कौन कर रहे बोलिए? What is the answer of this? minus 7 by 6. Minus 7 by 6. Oops. Minus 7 by 6 is the answer of this question. This is the part of the line integral. तो इस तरह से अपन लाइन इंटीग्रल करते हैं. अब इसके बाद आप सरफेस इंटीग्रल का भी कॉन्सेप्ट आपको पता रहे तो फिर हम इजी बन जाते हैं आपके. सरफेस इंटीग्रल भी आना तभी आप कर सकते हैं. और एक सेक्शन तो नेक्स्ट सेक्शन में विल डू द सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, ओके सर. रेडी रहिए. नेक्स्ट सेक्शन में सरफेस इंटीग्रल.